और अंत में जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जिसका जजमेंट सितंबर 2021 में आया, श्रुति मैं इस चीज को दुर्भाग्य मानता हूं कि किस संस्था के प्रमुखों की क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, उनका टेन्योर कितना होना चाहिए, इसकी डायरेक्शंस जो हैं वो जुडिशरी से आए, बजाय इसके कि उसकी इनिशिएशन और उसके ऊपर फैसला संसद ले, पार्लियामेंट ले। और ये एक तरह का एक फैशन बन गया है शुभम राठौर से एग्जीक्यूटिव की जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव का जो रोल है, उसको स्नाय करके कम किया जा सके। और बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम ये नहीं देख पा रहे कि सबसे ज्यादा हनन जो है वो हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का है, उसका है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। FBI डायरेक्टर अमेरिका में जो एजेंसी है उसका 48 साल तक सुनिधि सानी वो FBI के डायरेक्टर रहे 48 साल तक। ये स्थिति थी कि उससे राष्ट्रपति डरते थे। तुषार मेहरा, यही कारण हुआ कि उन्होंने 1900 उदय भानु मिश्रा, सुन लीजिए, कहना ये चाह रहा हूं कि उसके बाद उसको घटाकर 10 साल की मियाद जो उनकी निर्धारित की गई, लेकिन हमारे यहाँ क्या था, खुला खेल था, कोई टेन्योर नहीं था, सरकार के ऊपर निर्भर था, जिसको जिस समय जितनी एक्सटेंशन देनी है बढ़ानी है बढ़ा दीजिए, कोई नियम नहीं, कानून नहीं। लेकिन ये कोशिश की गई है इस बार कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे, जिसमें 2 साल विशाखा शर्मा कम से कम के टेन्योर की जो एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उस टेन्योर को बढ़ाकर 7 साल तक लिया जा रहा है, यश गुप्ता, अप टू 1 ईयर एट अ टाइम। लेकिन इसमें भी मीन मेख निकाले जा रहे हैं, इसमें सरकार की नीयत या बदनीयत उसके बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ कहा गया कि ये आर्बिट्रेरी है, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मेरा सीधा सा सवाल है, एक वो स्थिति थी and the last candidate is Gunjan Kashyap. डेमोक्रेसी खतरे में कभी नहीं थी। अब जब टेन्योर्स हैं तो डेमोक्रेसी खतरे में हो गई, और डेमोक्रेसी खतरे में हो गई जिनको प्रोफेसर साहब डोंकीज कह रहे थे। मैं भी उसी जमात से आता हूँ, और यदि आपको अपने अधिकारियों पे और अपनी राजनीतिक व्यवस्था पे in case there is any kind of mix-up in the degrees that you have received, you can resolve it outside the hall later after the proceedings. अपॉइंटमेंट करवाती है, रेकमेंड करती है, Now BA LLB honors degrees. Sir, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Bachelor of Arts, Bachelor of Laws, BA LLB honors of batches 2015 and 2016, whose names are set out in the list. They have been found qualified for the degree of BA LLB honors, to which I pray they may be admitted. The candidates taking the degree of BA LLB honors in person will please stand for लगा रहे हैं। जो कमेटी जो स्थापित की गई है, इससे ऊपर कमेटी क्या जाएगी? चांद से लेके आएंगे क्या इंसानों को जो सेलेक्ट करेंगे? पूरी दुनिया में एग्जीक्यूटिव ये काम करती है, लेकिन यहाँ पर इसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व किया हुआ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इन्वॉल्व किया है, इससे आगे और कहाँ जाएंगे? यदि आप ईडी की भी बात करें, डायरेक्टर एनफोर्समेंट की, उसमें भी पूरा का पूरा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो उसके मेंबर हैं कमेटी के, 3 सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट जो सरकार के हैं, होम सेक्रेटरी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी डीओपीटी है, वो उसके सदस्य हैं। और वही जो मैं बात जिस पे आ रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि पीस मील एक्सटेंशन जो है ये सरकार करेगी, ये कमिटीज ने करनी है। वही कमिटी जिन्होंने उस व्यक्ति को ओरिजिनली उपयुक्त पाया था और रेकमेंड किया था उस पद को हासिल करने के लिए, उस पद को ग्रहण करने के लिए। तो ऐसा क्या है कि 2 साल तक उसकी टर्म अगर है वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे वही कमेटी अगर उसको एक्सटेंशन देती है तो वो एक डाउटफुल इशू हो गया सारा। I request the Chancellor to again kindly come forward for the conferment of the degrees. I would be calling out first the BA-LLB Honours Batch of 2015. The first name is Akansha Bharadwaj. किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को, एक अधिकारी को एक सीट में रखने के लिए किया अभिषेक अंथवाल। मान्यवर, ये मुद्दा इंस्टीट्यूशनल है। वो व्यक्ति आज है, कल नहीं होगा, 2 साल बाद नहीं होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो हमेशा के लिए है।
जो निशिकांत दुबे जी ने अभी जिक्र किया, कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए 1 महीना रिटायरमेंट से पहले, और वो 3 साल तक उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी। अदिति बोहरा। यहाँ पे ये भी कहा गया था कि इसका रिपल डाउन इफेक्ट होता है नीचे वालों पे। कई लोगों का जिनका नंबर लग सकता था इन पोस्ट के लिए, उनका हक आदित्य जिंदल। जी जी। तो और सभी सांसद आदित्य मेनन। लोगों से बस मैं आधे राय लेते हैं, पूरा करें। ठीक है, पूरा कर लीजिए, कर लीजिए। आधे मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अमन गुप्ता। तो जिनको कैबिनेट सेक्रेटरी तक की पोस्ट को, जहाँ पे 3 साल के लिए कैसे आदमी अनन्य वीरेंद्र मिश्रा सर्विस बची थी, उसकी तिलांजलि दी जा सकती है, बाकियों के राइट की। यहाँ पे इनको याद आ रहा है कि नीचे के 4-5 जो बैचेस हैं उनका नुकसान अनीता कृष्णमूर्ति। किसी का नहीं हो जाएगा। जैसे कर्नल राठौर ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ये सिलेक्शन पोस्ट हैं, ये कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं है कि आप उस स्तर पे पहुंच अंकित जाएंगे कुमार। तो आपका ये बनना निश्चित है। मैं जब अकेडमी में था तो किसी भले अफसर ने हमें समझाया था कि बेटा 3 चीज हैं जो अंत में आके डिसाइड करेंगे कि तुम्हें टॉप पोजीशन मिलती है या नहीं। अर्षित गुप्ता। एक तो लक, दूसरी कॉम्पिटेंस, और तीसरी आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो वो मौके की बात है कि किसका नंबर लगे ना लगे। अंत में अर्चिता श्रीवास्तव। ये इशू था कि इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाया जाए। ये मैं आदरणीय मंत्री जी के लिए छोड़ दूंगा, वो उसका अर्पण वर्मा। मुझे विश्वास है भरपूर जवाब देंगे। मैं सिर्फ किराए होते 1 घंटा समय बढ़ाया जाए। मैडम खत्म 15 सेकंड। मैं सिर्फ बेंजामिन अर्शदीप सिंह को कोट करूंगा इस संबंध में। एंड आई कोट, रिमेंबर नॉट ओनली टू से द राइट थिंग इन द राइट प्लेस, बट फार मोर डिफिकल्ट स्टिल टू लीव अनसेड द रॉन्ग थिंग ऑन द आशुतोष सिंह। Madam, for quite some time it has become fashionable in our country to belittle and diminish the executive. अस्मिता I'm वर्मा। all for legislative oversight and legal scrutiny on actions of the executive, but it pains when other institutions try to encroach upon or usurp the role Ayush and Singh। authority of the executive and even the legislature. This is a bill in the right direction. It does not whittle down the autonomy of these institutions So we in any have way. 2 Ayush Singhs Rather, again it seeks in to this strengthen class. the The institutional next Ayush stability Singh. and continuity. As such, I support this bill. Thank you. जी माधवन जी, श्री जी माधवन जी। Thank you very much, madam. आयुषी अग्रवाल। Being the Bharti। premier investigating agency of India, the Central Bureau of Investigation was originally set up to investigate bribery Bhavya and Fatela। governmental corruption with an ever increasing nature of serious crimes. CBI has expanded Kumar। its jurisdiction to investigate breaches of central laws, multi-state organized crime, multi-agency or Diksha Brahma। international cases with emphasis on economic crimes and also special crimes and cases of corruption. Positives in this regard. Divyansh Joshi। The amendment of Delhi Special Police Establishment Act 1946 forms a crucial step in the right दुष्यंत direction. नारायणन। Would ensure the provisions of a stable tenure to the Director of CBI as well as be a further push towards operational Gali Rudra autonomy Rao. within So the he's getting for the governmental system. BLLB degree right now. Earlier he got for the LLM. The extension of tenure of the director could be a welcome step to Gaurika Khandelwal। enhance the recruitment Harsh policies Arya। of the organization to ensure an unbiased and unfavorable workforce. Further, the provision of Hima। a statutory status to the agency similar to that of Controller and Auditor General and the Election Commission Ipsita will help Pallavi Sahu। maintain the independence of the institution. The Parliamentary Standing Committee 2007 recommendations on the promulgation of a Jagrat Vyas। separate act is it tuned with the requirement of time to ensure credibility and Karthik impartiality. Inzamam Prasad। Long duration of tenureship Kumar of Raghav। director discourages corrupt people in doing anti-social and anti-national activities. It will reduce Manaswini abuse or Singh। misuse or evasive use of authority of doer and make some accountable for his acts and Manisha Kawat। deeds if done unlawfully. It will reduce scope for tampering etc. in the
documentary and Narayan Singh. circumstantial evidence. It helps in developing appropriate and sequential strategies in office and field works. Neeraj Nainani. Neha Jha. Disadvantages, sir, in this regard. If Neil unchecked, Sameer it Shroff. will lead to arbitrary acts and illegal self-enrichment. Thank you, sir. Nidhi Next Khandelwal. speaker, Sri Asauddin Owaisi. Sir, thank you for giving the opportunity. Sir, Nikhil I stand Anand. to oppose both these ordinances. And I must say, sir, that I have never seen in my short political career such an audacious attempt to undermine a Supreme Court judgment. Nishant Badran. These two ordinances are in contravention of the Supreme Court judgment. And this government is utterly in contempt of court. That is para 23 of the Common Padma Court judgment, Venkatraman. which has been mentioned by you and other honorable members. So this is also an issue of independence of investigative authorities. Fixed tenure cannot be on the basis of Prachi whims and desires Tatwal. of the present Prime Minister. And if the extension can only be given if the behavior is good. Now this ordinance creates an inbuilt mechanism of control in it, Pragya Dwivedi. so that both the directors must subordinate themselves to the present government. Thirdly, sir, the CBI was called a cage parrot by Prarthana the Sharma. Honorable Court observation. But this ordinance wants to take away even the vocal cord of the CBI. This will take away the vocal cord. The extension of Prashasti tenure Bhatt. will be given as a bakshish. That is what this ordinance wants to do. And in a constitutional democracy, sir, post cannot be treated Priya as a patronage. Tyagi. You are creating a system where you will encourage patronage. In 2013, the then CM, Mr. Modi, had called CBI a Congress Pulkit Palak. Bureau of Investigation. Can the government say what reforms you have brought in CBI? Sir, instead of reforms, you have brought an ordinance to increase the dependence, Pundurik to increase Sharma. the CBI and ED dependence on the government. And how many cases were filed by CBI against their own officials, sir? Corruption charges against them in 10 years. 60 cases were filed against 7 Rajiv officers who were Sutrakar. deputed. Only 4 of its officials were convicted in 60 cases, sir. Out of these 10 years, 7 years are of this government. This clearly shows what steps you have taken. Rajkavar If Singh Kumar. investigation is done on the basis of the political masters, then independence goes away. Sir, you know for a fact that every constitutional power is coupled with a duty. Rashi Mangal. Now that is the accepted principle of administrative and constitutional law. But the reality is, the power to investigate has become to Saket harass, Jain. the power to harass. The duty to victims has been replaced with the duty to please the political bosses. And I can give an example, sir. The CBI Sanjana Amar investigating Ravjiani. the criminal case of demolition of Babri Masjid, Shakaib Khan. the court exonerated all the accused. Why didn't you file an appeal? You didn't file an appeal because the CBI officers owe their existence Shubham to Agrawal. to their ideological political masters. But you will file an appeal against Raja. Why? Because he's a Dalit. I'll give another example, sir. The then Shweta Andhra Pradesh, Venkateshan. the then DGP wrote one letter against a Congress leader that was signed by a Congress MLA, posted to the Siddharth High Court, Gautam. CBI investigated. Now that person is on a constitutional post. I can give another Swagat example. Dash. MP of Rampur is in jail. Why? Because when he was minister about appointments, he's in jail. But what about his chief minister? You don't want to go against the Tanen chief Jain. minister, ex-chief minister, but you want to go against Rampur MP. Sir, if you are really interested in the independence of CBI, remove section Sania 60 of the Kanodia. CSV Act, remove section 26 of CBC Act. You don't want to do. Another example, sir, which I want to show how the government is controlling CBI. Tanuja the Meena. present CBI director, his appointment letter and the 2019 appointment letter of the then CBI director. Tushar Give Kant. me 1 minute, I want to quote. In the May 2021 appointment of the present director, it says, for a period of 2 years from the date of assumption of charge of the Vasundhara office or Kaul. until further orders, which was earlier,
the notification said the ACC based on panel recommended by the committee. Now in 2019, what it said, Vibham I Raman. will read, sir. The appointment committee of the cabinet has based on the panel recommended by the committee constituted as per section 4A of the DSP Act, approved the Vivek appointment of Srivastava. so-and-so as director CBI for a period of 2 years from the date of assumption of change of charge of office. This is not mentioned in the present appointment of May 2020-21. Yusra Why? Because Khan. again you want to keep that person on your discretion. If he doesn't act, remove him. Sir, I conclude by asking the government, sir. I conclude by asking the government. This Yuvnesh ordinance Sharma. will be struck down, this is my opinion, as NJAC. You are not reading the writing on the wall. You passed. And through the last farm name laws. from this batch People have is not Rashi accepted, you have Pathak. withdrawn it. What are you doing? You came into power. I will because now of call the out the names government. of What has been the BLLB development Honours, in batch Lokpal? of You can tell us. 2016. This government is not reading the writing on the wall, sir. And I will oppose this bill. You are getting So carried now away. the Power- batch of power is not 2016 eternal. BLLB Today you are in Honours. power, tomorrow The you are first not name is there. Adarsh So Singh. making 5 years tomorrow, Congress or any other party comes into power, you should not shout. You should not complain because you have created a double-edged sword which will also hit you back. Atman You are Shukla. not going to be there forever. You will be coming here, inshallah. Very soon you will be coming here. But you are creating such a system of control where every political party uses it. So that is why, sir, I oppose these two ordinances. I hope Ayushi this Ramesh will resolve Goyal. the government. After withdrawing the farm laws, I was expecting that the saner position taken by Prime Minister, but this government is Abhay drunk in Pratap power and Singh. arrogance. They will face the wrath of the people. Thank you. Thank you, thank you. Sri Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं Abhinav Hansaram Raman, sorry. Abhinav Hansaraman. विधेयक 2021 पर जो चर्चा हो रही है उसमें आपने भाग लेने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। Abhishek Kumar. महोदय, लोक हित में ईडी और सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के उद्देश्य को लोक हित में बताया। मेरे से पूर्व Aditya विद्वान Anand. वक्ताओं ने जो विपक्ष में थे उन्होंने पक्ष के ऊपर आरोप लगाए, जो पक्ष में थे उन्होंने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए। ये सही है Aishwarya Gupta. कि सीबीआई Aditya Mittal, you're not there. कहीं न कहीं Akshita Rai. के ऊपर भी किसी की कमान होनी चाहिए। और ये जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जहाँ मैं आता हूँ, एक हमारे साथ केंद्र के मंत्री थे, हमारे ऊपर हमला हुआ, Alin Gupta. उस मामले की आज तक एफआईआर नहीं हुई। अगर दिल्ली के अंदर कोई आदमी अपील नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जिसके खिलाफ होगी उसको अंबर वहाँ पे टिक्कू। रगड़ के रख देगी उस आदमी को। इसलिए सीबीआई को भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। सीबीआई के ऊपर भी केंद्र का, हमने तो ये भी कहा Amit Verma. कि कॉलेजियम में भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मनोनयन के अंदर भी, नियुक्ति के अंदर भी सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। आखिर लोकतंत्र है। सबसे बड़ी अनंत विधायिका, सांगल। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये सबसे बड़ा ये मैसेज देश के अंदर जाना चाहिए। सौद महोदय, मैं इसके अंदर एक बात सरकार से पूछना चाहूँगा। Animesh Chaudhary. पहले अध्यादेश आप लेते आ रहे हो इनका ईडी के डायरेक्टर का बढ़ाने का, इसके अंदर कौन सा अनिरुद्ध रोक है सिंह। इनका जरा जब मंत्री जी आप जवाब देंगे इसका जरूर बताना। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँ, सदन के साथियों ने Anmol Dhawan. जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दुर्लभ मामलों में ही कार्यकाल को बढ़ाया जाए, ऐसे में ऐसी क्या स्थिति बनी, लोग में से क्यों आवश्यक हुआ, ये मंत्री जी आप बताएं। आज विपक्ष के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के माध्यम से जिन बिलों का विरोध किया, उन्हें भी वर्ष 2013 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी, तब कोल फील्ड आवंटन मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अंशिका केंद्र में बंद केसरवानी। करना बताया था उस समय। तो आपको भी भाषण दे के चले गए सारे, कोई है ही नहीं, सुनाए किसको हम बताओ। ओवैसी जी खड़े हो तो थर्ड फ्रंट में, आप तो थर्ड फ्रंट के अंदर। Anshul Gondale. तो अच्छा, इस बात को याद रखना चाहिए। सभापति महोदय, मंत्री महोदय, अंशुल दिल्ली प्रवीण विद्यार्थी राठी। स्थापन विधेयक 2021 के उद्देश्य और कारण में जो था उस पर विस्तृत नहीं जाना चाहता, क्योंकि कई मान्य सदस्यों ने अपनी बात कही। लेकिन मैं आपसे मांग करता हूं कि लोगों का विश्वास अनुभव जैसी बत्रा। संस्था पर बहुत है। आज भी कोई आंदोलन होता है स्टेट के अंदर, और हम जब लोग पहुंचते तो सबसे पहली डिमांड यही होती है कि सीबीआई। Anugya Chauhan. ये सही है कि सीबीआई के अंदर इतने ज्यादा मामले हो गए, सीबीआई समय पे हो सकता है कोई मामलों का खुलासा नहीं करे, पूरा उनके पास तंत्र अनुकृति स्टाफ, कुदेशा। लेकिन भरोसा आज भी देश के अंदर आम नागरिक को है, वो सीबीआई जांच पे सबसे बड़ा भरोसा है। महोदय, हमारी जांच सीबीआई के अंदर अनुना तिवारी। दोहराना चाहूंगा कि न्याय समय पर नहीं मिलना भी अन्याय। ऐसे में सीबीआई के पास लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है, उनका निष्ठान जल्द से जल्द कैसे हो,
उस पर ध्यान दिया जाए। अगर संसाधनों स्टाफ अनुष्का पांडे। सरकार उसको पूरा करें। 1 दिसंबर 2021 को मेरे सवाल के जवाब में सीबीआई के लंबित मामलों के दिए गए आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसमें आयुष आपने बताया बहेती। 25 नवंबर 21 तक सीबीआई के पास राजस्थान से जुड़े 25 और अन्य राज्यों से जुड़े 1256 मामले जांच हेतु लंबित है। मैं आयुषी संदर्भ में मंत्री पाठक। जी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में बाड़मेर जिले में कमलेश प्रजापत नामक व्यक्ति का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के एक पूर्व मंत्री और उनके परिजनों का भारत नाम आया, राकेश भारद्वाज। जिसकी जांच सीबीआई करी है। उसी पूर्व मंत्री के इशारे पर पूर्व में मेरे तथा केंद्र भारत सरकार के केंद्र के मंत्री पे जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसका जिक्र मैंने चिन्मय किया। श्रीवास्तव। समझ मोदे, इस कमलेश प्रजापत फर्जी एनकाउंटर की जांच जल्द से जल्द ताकि आरोपी सलाखों को पूछे जाए। साथ ही मैं मंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के पाली जिले के फालना में एकता तोमर। 23/11/2016 को मनोहर राजपुरोहित नामक छात्र का अपहरण हुआ। राजस्थान सरकार की एजेंसियों उस बालक को आज तक ढूंढने में नाकाम रही और उनके परिजनों की मांग पर जनता के दबाव गौरी सोनी। राजस्थान की सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का गीतांश अग्रवाल। लेकिन आज तक सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर सीबीआई जवाब तलब किया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील हर्ष चौधरी। त्वरित प्रभाव से शुरू की जाए। समझ मोदे, इसी प्रकार 21/6/2009 को राजस्थान के चक राजासर नौर हनुमानगढ़ हिमांशु मिश्रा। चक राजासर हत्याकांड हुआ, जिसमें 3 लालचंद सुतार, उसकी पत्नी एक मिनट लास्ट 1 मिनट ईशा गुप्ता। हाँ, सरोज वे सिमरन जीतू तथा तुलानी। नीथा उसकी बेटी की हत्या हुई। काली श्रीकरी। 2016 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। आज तक नतीजा नहीं निकला, मतलब 6 साल हो गए। मैं मांग करूंगा सरकार से सीबीआई इसके अंदर जल्दी से जल्दी नतीजा निकालें। समझ मोदे, एक मेरा निवेदन और था। कनन शैलेश झुंझुनवाला। लवली कंडारा को फर्जी एनकाउंटर में तो मुख्यमंत्री के इलाके के अंदर आता है। बड़ा आंदोलन हुआ, मैं खुद वहां गया और सीबीआई जांच की मांग की। करण विजय। 8 गोली 7 गोली मारी थी गाड़ी के नजदीक। 1 मिनट टाइम दो, एक मिनट समझ मुझे 1 मिनट। आप भी सिंगल आपने 5 मिनट मांगा, 7 मिनट्स हो गया। इतना ध्यान रखो आप। 1 मिनट मात्र मेरा, एक मिनट साहब, 1 मिनट। कार्तिकेय सिंह। एक मिनट लास्ट मेरा। ये इसकी लवली कंडारा हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। और समझ मुझे एक बात मैं कहना चाहूँगा कशिश सिंगल। कि पहले लक्षाना रामकृष्णन। बोपोर घोटाला जब हुआ था तब हम स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ा करते थे। हाई कोर्ट ने सीबीआई को टेक्निकल मनीष भाव। उस केस को मुकुल वर्मा की बात कही थी सभा में, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी। 1 मिनट। और सरकार ने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका। निधि कुमारी। क्षेत्रोची का जो पैसा फ्रीज किया वो पैसा बाहर निकल जाए और उसका अरबों खरबों रुपए पैसा बाहर निकल गया, जो इनका रिश्तेदार निकिता तादिकुपुला। दुनिया जानती है उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर बोपोर घोटाले की उसे सरकार चली गई, कई मंत्री चले गए। ये नीतीश राज। सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग किया। जिसका मौका लगा तो उसने मौके पे चौका लगाया। जी धन्यवाद। आप समर्थन करता है या शाह रिया आप राकेश। का समर्थन करता हूँ। श्री डी रवि कुमार। साक्षी तिक्कमणि। இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை நான் எதிர்க்கிறேன். शाम्भवी सिंह। 2013ஆம் ஆண்டிலே கவுஹாத்தி உயர்நீதிமன்றம் சிபிஐஏ சட்ட ரீதியாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அல்ல என்று தீர்ப்பை வழங்கியது. அதற்கு எதிராக உடனடியாக உச்சநீதிமன்றத்திலே தடையாணை பெறப்பட்ட காரணத்தால் அது நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சட்டவிரோதமான அமைப்பு என்று உயர்நீதிமன்றத்தால் சொல்லப்பட்ட அந்த அமைப்புக்கு உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆணைக்கு எதிராக இப்பொழுது அதன் இயக்குனருக்கு பதவி நீட்டிப்பு என்ற And there are 2 Shubham Jains again in this class, so the next Shubham Jain. சிபிஐ ஒரு கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட கிளி என்று உச்சநீதிமன்றமே ஒரு வழக்கில் சொன்னது இருக்கிற உறுப்பினர்கள் கூட சுட்டிக்காட்டினார்கள். அந்த கிளி தமிழ்நாட்டிலே கிளியை வைத்து ஜோதிடம் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் சீட்டை அந்த கிளி எடுத்து தரும். அதுபோல இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்கள் சொல்கிற வேலையை செய்கிற ஒரு அமைப்பாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அண்மையிலே ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே நீதிபதிகள் கிருபாகரன், புகழேந்தி ஆகியோருடைய அமர்விலே சிபிஐ ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பாக செயல்பட
ஒன்றிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிபிஐ சுதந்திரமாக செயல்படும் போதுதான் உண்மையிலேயே இங்கே அது வழக்குகளை விசாரிக்க முடியும், குற்றங்களை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் SC/ST மக்கள் மீதான வன்கொடுமைகள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகின்றன என்பதை நம்முடைய நேஷனல் கிரைம் அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. அப்படி வன்கொடுமைகள் தொடர்பான வழக்குகளில் 1-2 சிபிஐ விசாரிக்கிறது. அப்படியான வழக்குகளை விசாரித்து அந்த குற்றவாளிகளுக்கு பெரிய தண்டனையை பெற்று தந்திருக்கிறதா என்றால் அப்படியான ஒரு சம்பவத்தையும் நம்மால் எனவே சிபிஐ அரசியல் நோக்கத்துக்காக ஆட்சியாளர்களால் பயன்படுத்துகிற ஒரு அமைப்பாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது என்பது பட்டவர்த்தமாக தெரிகிற ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது. எனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்ததன் அடிப்படையில் சிபிஐ அமைப்பை ஒரு தேர்தல் ஆணையம் இருக்கிறதோ எப்படி அது போன்ற autonomous organizations எப்படி இருக்கின்றனவோ. A very big thank you to our Chancellor Sir for his gracious conferment of the degrees, and I request everyone to join in for a hearty round of applause for all the graduating students. அதுபோல இல்லாமல் முழுக்க தன்னுடைய அரசியல் கட்டுப்பாட்டுக்கு இந்த அமைப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலே இந்த சட்ட திருத்தம் இங்கே கொண்டு வரப்படுகின்ற medals, certificates and prizes. I have the honor to present to the Honorable Chief Guest and other dignitaries the candidates for the award of medals and prizes instituted by various endowments in BA LLB Honours and Master of Laws LLM, whose names are set out in the list. They have been found qualified for the award of medals and prizes. The candidates receiving medals and prizes will please stand forward. I have the honor to request Honorable Visitor Sir, Honorable Mr. Justice N.V. Ramana, Chief Justice of India and Visitor NLU Delhi, to present gold medals to 4 students of batch of 2015 and 16. All the 4 are girls, sir. भारत सरकार इस बिल को क्यों ला रही है, इस पर लंबा विचार विमर्श और बहस हुआ है, लेकिन so I would be reading out the names. Miss Ayushi Agarwal has got 11 gold medals and 2 cash prize. The name of the awards are Shri K.K. Venugopal. He has instituted the award in the name of his father, late Shri M.K. Nambiar, on the subject of constitutional law. Shri A.K. Ganguly has instituted in the name of late Shri Advait Pada Ganguly, his father, on constitutional law. Justice K. Ramamurthy, former Judge High Court of Delhi, has constituted award in the name of late Shri T.G. Krishnamurthy, freedom fighter, and Mrs. K. Subbulakshmi, his parents, on the subject of constitutional law. Justice S.B. Sinha, former Judge, Supreme Court of India, in the name has instituted the award in the name of his late father, Shri A.N. Sinha, on the subject of public law. Shri Shardul S. Shroff has instituted the award in the name of Pallavi and Shardul Shroff on the subject of corporate law. Shri Pawan Bhatia, on behalf of Royal Safe Company, has instituted the award in the name of Shri Satpinder Singh Bhatia on the subject of international trade law. Kajal and Sheetal Mishra, advocates and founders, SK Juris Legal Group, has instituted the award in the name of Kajal and Sheetal Mishra on taxation of laws. Suresh Shroff Memorial Trust has instituted the award in the name of Suresh Shroff for the first rank holder. Justice R.C. Lahoti, former Chief Justice of India, has instituted the award in the name of his father, late Shri Ratan Lal Lahoti, for the Best Student of the Year award. Mr. Chetan Sabharwal and Mr. Nitin Sabharwal has instituted the Justice Y.K. Sabharwal Award for the Best Student of the Year award, and Dr. Mrs. Santosh Chawla has instituted in the name of late
Justice T.P.S. Chawla on the subject of legal aid and community outreach. Shri Manoj Swarup has instituted cash prize in the name of his father, late Shri Paramatma Swarup, for constitutional law, and Shri Digambar Sen Sani, settler and founder trustee, Bodhraj Sani Memorial Trust, has instituted the award in the name of Professor Ghanshyam Singh Memorial for Civil Procedure Court. I would now call out the next name, Miss Sanjana Amar Ravjiani. She is getting the award for, it's been instituted by Shri Mohan Ahuja and Shri Vinay Ahuja, the gold medal in the name of Mohanlal House on the subject of alternative dispute resolution. Shri Subhash Chandra Sharma has instituted the award in the name of Srimati Lajja Sharma on the subject of jurisprudence. Bharti and Suresh Shroff Memorial Trust has instituted the award in the name of Bharti S. Shroff for the second rank holder. Shri P.P. Rao has instituted the award in the name of his mother, late Shri Shrimati Pavni Satya Narayanama, for overall excellence. Dr. Abhishek Manu Singhvi, Senior Advocate, Supreme Court of India, has instituted the award in the name of his father, late Dr. L.M. Singhvi, for all-round performance. Thank you, sir. We have the next two names for the 2016 BLLB batch, honors batch. Miss Aishwarya Gupta. She is a recipient of 7 gold medals and 1 cash prize. Shri K.K. Venugopal has instituted the award in the name of late Shri M.K. Nambiar on constitutional law. Shri A.K. Ganguly, Senior Advocate, Supreme Court of India, has instituted the award in the name of late Shri Advait Pada Ganguly on constitutional law. Justice K. Ramurthy, former Judge, High Court of Delhi, instituted the award in the name of his parents, late Shri T.G. Krishnamurthy, freedom fighter, and Mrs. K. Subbulakshmi on constitutional law. Justice S.B. Sinha, former Judge, Supreme Court of India, instituted the award in the name of late Shri N. Sinha on the subject of public law. Shri Subhash Chandra Sharma instituted the award in the name of Srimati Lajja Sharma on the subject of jurisprudence. Suresh Shroff Memorial Trust instituted the award in the name of Suresh Shroff for the first rank holder, and Justice R.C. Lahoti, former Chief Justice of India, instituted in the name of his father, Shri Ratan Lal Lahoti, as for the Best Student of the Year award. The cash prize has been instituted by Shri Manoj Swarup in the name of his father, late Shri Paramatma Swarup, for constitutional law. Now the next name is of Miss Isha Gupta. She is recipient of 4 gold medals and 2 cash awards. And Shri S.R. Sharma, Advocate, Supreme Court of India, has instituted the award in the name of Srimati Sadhana Sharma on criminal law. Mrs. Madhu Sharan has instituted the award in the name of Senior Advocate Amrendra Sharan on criminal law. Shri Amitesh Banerjee, Advocate, High Court, Kolkata, has instituted the award in the name of Honorable Justice Umesh Chandra Banerjee's father on the subject of intellectual property rights. And Shri Praveen Anand has instituted the award in the name of Anand and Anand on intellectual property rights. The 2 cash prize has been instituted by Shri Digambar Sen Sani, settler and founder trustee, Bodhraj Sani Memorial Trust, in the name of Professor Ghanshyam Singh Memorial for Civil Procedure Code, and Dr. Professor K.N. Chandrasekharan Pillai has instituted the cash prize in memory of Professor R.K. Kelkar on criminal law. Thank you, sir, so much. I have the honor to request Honorable Chief Minister of Delhi, Sri Arvind Kejriwal, to present gold medals to 5 students of batch 2015-16. I would request the Honorable Chief Minister to kindly come forward to present the gold medals and cash prize. Ms. Rupam has received the award from the LLM batch of 2019. It is an endowment by Mr. Arshad Paku Khan and Sophia Akselsrod. In the name of the medalist Dr. Kamar Ali Khan and Mrs. Annama Varke Khan on the subject of competition law and policy.
National Law University Delhi has instituted the endowment for the second rank holder. सीबीआई से उसकी जांच करवानी चाहिए। तो सीबीआई की जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, जो उसके ट्रस्ट है, उसके ऊपर हम बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। I would now call upon Ms. Gaurika Khandelwal, who belongs to the 2015 batch of the BLLB course, and she is recipient of 3 gold medals and 1 cash prize. The gold medals are by Shri Praveen Anand, in the name of Anand and Anand for intellectual property rights, Shri Amitesh Banerjee, Advocate High Court, Kolkata, in the name of Honorable Justice Umesh Chandra Banerjee for the subject intellectual property rights, Shri S.R. Sharma, Advocate Supreme Court of India, in the name of Shrimati Sadhna Sharma on criminal law, and the cash prize is by Professor Dr. K.N. Chandrasekharan Pillai, in the name of his teacher, Professor R.K. Kelkar, for criminal law. The next name, और 20/8/2015 से लेकर 27/10/2018 तक एक अधिकारी I would now call upon जो कि सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर की कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन Ms. Manisha Bhau. उनको स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट पे लगाया। She is a recipient of हमारी सरकार ने a number of awards. So, Bharati and Suresh Shroff Memorial Trust has instituted Bharati S. Shroff, the name of the award, as for the second rank holder. Mr. Chetan Sabharwal and Mr. Nitin Sabharwal have instituted the award in the name of Justice Y.K. Sabharwal for the Best Student of the Year award. Shri P.P. Rao has instituted in the name of Shrimati Pavani Satyanarayanama for the overall excellence. Dr. Mrs. Santosh Chawla has instituted the award in the name of late Justice T.P.S. Chawla for legal aid and community outreach. स्वागत राय जी ने क्या कहा कि ऑफिसर्स के लिए डंकीज का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि the next name is of Ms. Gauri Soni. ऑफिसर जो बहुत मेहनत करके ना, भी बहुत मेहनत करके वो सिलेक्शन उनका होता है, और उसके बाद she would be receiving the gold medals for the following: the award by Shardul S. Shroff in the name of Pallavi and Shardul Shroff award for corporate law, Kajal and Sheetal Mishra, advocates and founders, SKS Juris Legal Group, in the name of Kajal and Sheetal Mishra, taxation laws. Shri Inder Dutt Salwan, architect Salwan Furniture, in the name of late Shri Pandit Girdhari Lal Salwan for the best outgoing student for excellence through diversity award in jurisprudence. The award instituted by Professor Bharti in the name of her parents, late Shri Radhesham and Veer Bala, for the best student in environment law. पूरी कमेटी है बकायदा, जैसे Thank कि you, हमारे एमपी साहब ने भी कहा, और पूरी कमेटी है, चाहे वो हम सीबीआई की बात करें, चाहे हम वो सीवीसी की बात करें, दोनों के अंदर बकायदा कमेटी है, और सीवीसी के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, और जो सीबीआई के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चीफ जस्टिस हैं, और इसके साथ साथ जो है honor to request Honorable Mr. Justice D.N. Patel, Chief Justice High Court of Delhi and Chancellor in Delhi, to present gold medals to 6 students of LLM batch of 2019 and 2020. So I would request Honorable Chancellor sir to kindly come forward to present the gold. सतपाल जी ने भी और इन्होंने भी बताया कि एफबीआई के I would call now Ms. Iti Prajapati. और 12 साल तक रहे रॉबर्ट जी, जिनका इन्होंने जिक्र भी किया, और Ms. Iti Prajapati, she would be getting the gold medal endowed by Shri Inder Dutt Salwan, architect Salwan Furniture, in the name of late Shri Pandit Girdhari Lal Salwan for the best outgoing student from excellence through diversity. जमीन में धुआं बोया है, फल नहीं शाखों पर बम लगेंगे। देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, हम सब लोगों की सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से आपने देखा होगा कि बम जो है, अब भारत के लोग जो है बम नहीं देख रहे हैं। वो कोई समय था The next name is of Ms. Vinodharani SR. इंटरनेशनल के चाहे टेररिज्म का मामला है, The award is instituted by NLU Delhi as for the first rank holder of the LLM program. लास्ट अपना शेर सुनाकर मैं इसको खत्म करना चाहूंगी कि सुना है समुंदर को बड़ा तूफान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, गुमान मतलब घमंड, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, वहीं पर ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसे Mr. Arihant R. Sunge, he would receive for the third rank holder for LLM program instituted by NLU Delhi. ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணைய சட்ட திருத்தத்தை எதிர்க்கிறேன்.
நாட்டில் ஊழலையும் கருப்பு பணத்தையும் ஒழித்து நேர்மையான ஆட்சியை நாங்கள் நடத்துவோம் என்று 2014 பொதுத் தேர்தலில் வீரவசனம் பேசி இந்திய மக்களை ஏமாற்றி ஆட்சிக்கு வந்தது பாஜகவின் மோடி அரசு. அத்தோடு விட்டீர்களா? இல்லை, சுவிஸ் வங்கியில் உள்ள கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்து இந்தியரின் வங்கி கணக்கில் ரூபாய் 15 லட்சம் போடுவோம் என்று முழங்கினீர்கள். ஊழலை ஒழித்து விட்டீர்களா? Miss Vidya Subramaniam, she would be getting the award for the endowment made by Mr. Arshad Paku Khan and Sophia Axelrod. The name of the medal is Dr. Kamal Ali Khan and Mrs. Annama Barke Khan for competition law and policy. The next award is in the name of Miss Isha Rai, endowed by NLU Delhi as the first rank holder of the LLM program. அன்றைய பிரதமர் மதிப்பிற்குரிய மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தலைமையில் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களின் வழிகாட்டுதல் நடந்த அப்பழுக்கற்ற மக்களாட்சியை, ஏழை எளிய மக்களின், விவசாயிகளின் ஆட்சியை, இந்தியாவை உலகின் 3வது பொருளாதாரமாக உயர்த்தி காட்டிய அப்பழுக்கற்ற ஆட்சியை, அண்ணா ஹசாரேவை முன்னிறுத்தி பின்னால் நின்று கொண்டு ஊழல் ஆட்சி என்று ஊரெல்லாம் முழங்கினீர்கள். உண்மையிலேயே எங்கள் ஆட்சியில் ஊழல் செய்தீர்கள். The next name is of Mr. Vishnu Sagar. He is the second rank holder of the LLM program for the endowment made by NLU Delhi. அப்பழுக்கற்றது மட்டுமல்ல, ஊழலுக்கு எதிரான யுத்தத்தை முன்னின்று நடத்தியது. ஊழலை ஒழிப்பதற்கு, வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை நடத்துவதற்கு, மக்களை அதிகாரப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் அடுக்கடுக்கான சட்டங்களை கொண்டு வந்தோம். அவற்றில் முக்கியமானது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம், ஊழல் ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு சட்டம். மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்களின் அச்சேதின் ஆட்சியில் இந்த சட்டங்களின் நிலை என்ன? குத்துயிரும் கொலை உயிருமாக உங்கள் காலடியில். Thank you so much. Thank you very much. I'm sorry I missed out the name of Mr. Nitin Tyagi, who is a recipient of Shri S.R. Sharma, the endowment made by Shri S.R. Sharma, Advocate, Supreme Court of India for criminal law, and I would request the Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal ji, to மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்களின் அச்சேதின் ஆட்சியில் இந்த சட்டங்களின் நிலை என்ன? குத்துயிரும் கொலை உயிருமாய் உங்கள் காலடியில் தனது இறுதி மூச்சை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டு கிடக்கின்றன இந்த சட்டங்கள். மாண்புமிகு நரேந்திர மோடியின் அரசு இந்த சட்டங்களின் பல்லை மட்டுமல்ல, ஆன்மாவையும் உடைத்து விட்டது. மோடி அரசின் முதல் 5 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் தனக்கு தலைவலியாக இருந்த அனைத்து அமைப்புகளையும் நாடாளுமன்றத்தில் உங்களுக்கு உள்ள ராட்சச பெரும்பான்மை also the recipient of the Professor Dr. K.N. Chandrasekhan Pillai Award in the name of his teacher Professor R.K. Kenkar and for the cash prize for criminal law. ஆயுதத்தை உருவாக்கி கொடுத்தது. திரு நரேந்திர மோடியின் அரசு ஆட்சிக்கு வந்த கையோடு முதல் வேலையாக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை முடக்கியது. அதிகாரமிக்க ஊழல் ஒழிப்பில் பெரும்பங்காற்றிய மத்திய தகவல் ஆணையர் பதவி மோடி அரசின் முதல் 10 மாதங்கள் காலியாக கிடந்தது. பிறகு தகவல் அறிவு உரிமை சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் இந்திய தேர்தல் ஆணையர், ஊழல் கண்காணிப்பு இயக்குனர் ஆகியோருக்கு இணையாக தேசிய தகவல் ஆணையருக்கு இருந்த அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டது. தகவல் உரிமை ஆணையத்தின் பல்லை பிடுங்கும் வகையில் தகவல் ஆணையர்கள் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டது. இப்பொழுது மத்திய ஊழல் ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஆணையரின் பதவிக்காலத்தை 5 ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கும் Mr. Aditya Mittal, he is getting the award instituted by Shri Pawan Bhatia on behalf of Royal Safe Company in the name of Shri Satpinder Singh Bhatia on international trade law. மாற்றவே அரசு அதன் இயக்குனரின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்தது என்பது வெளிப்படை. ஏன் இந்த ஊழலுக்கு எதிரான இந்த அரசு மக்கள் கையில் இருக்கும் ஊழலை கண்டு பயப்படுகிறது? ஏன் சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வருகிறது என்பதை நீங்கள் இங்கே விளக்க வேண்டும். இது மட்டுமல்ல, தேர்தல் கடல் பத்திரம் என்ற ஊழலை நீங்கள் நிலைநாட்டி இருக்கிறீர்கள். 2018ஆம் ஆண்டு 75%, 2019-20ஆம் ஆண்டு 76% பணம் பாஜக கட்சிக்கே வந்திருக்கிறது. ஏறக்குறைய 4500 கோடி ரூபாய் பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டுமே தேர்தல் பெற்றிருக்கிறது என்பதை இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். சார், சமீபத்தில் இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் வெற்றியும் பாஜகவின் தோல்வியும் உங்களுடைய நீலச்சாயம் வெளுத்துக் கொண்டு. The next name is of Ms. Kashish Singhal. She is getting the award instituted by Dr. Siddharth Luthra. Oh, sorry. What's थैंक यू वेरी मच सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस और दिल्ली sorry, I'm really sorry. बिल 2021 पर आज हमने देखा इस सदन में No, Mr. Miss, yeah. बुलेट ट्रेन तो चली। Yeah, so he is getting the award instituted by Dr. Siddharth Luthra in the name of Mr. K.K. Luthra, Senior Advocate for Evidence Law. आप समय कम करने की घंटी वहाँ से बजाएंगे तो भी अपनी पूरी बात इतने कम समय में कहा जा सकता। आई कॉम्प्लीमेंट ज्योतिमणि सर, मैं आपसे के माध्यम से
Time is very, अब मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर ये सरकार जो है ऑर्डिनेंस की सरकार, Thank you so much, sir. जब 2014 में माननीय मोदी जी ने शपथ ग्रहण की तो सबसे पहला काम अगर इनकी कैबिनेट ने किया तो वो I have the honor to request Honorable Justice Rajneesh Bhatnagar, Judge High Court of Delhi, to present gold medals to two students of batch 2016. I would request Honorable Justice Rajneesh Bhatnagar to kindly come forward to present the gold medals and a cash prize. So the name of the first student is Mr. Jeetu Tulani. He is setting the gold medal instituted by Shri Mohan Ahuja and Shri Vinay Ahuja in the name of Mohan Law House on alternative dispute resolution. टेन्योर होता था उसको 5 साल से घटा करके 3 साल करा और आज आप जो है डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर ईडी, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसी अफसर का, हम जानते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव में, हमारे सिस्टम में अफसर जिसकी सरकार जो ऊपर बैठा है उसको उसकी सुननी पड़ती है. Miss Priya would be getting the award, one gold medal and a cash prize. The gold medal is instituted by Dr. Abhishek Manu Singhvi, Senior Advocate, Supreme Court of India, in the name of his late father, late Dr. L.M. Singhvi, for all-round performance, and a cash prize instituted by Canara Bank in the name of Canara Bank Endowment Fund for banking law and negotiable instruments. Thank you, sir. I would now request our Registrar, Professor Nukma Goyal, to announce the Vice Chancellor's Awards, and I would request our Vice Chancellor, Professor Rao, to kindly come forward for the giving away of the awards. अरे दुनिया ने देखा कि कैसे नोटबंदी में आपने भ्रष्टाचार किया. Good evening to one and all. The Vice Chancellor, sir, has instituted a gold medal for overall best female students and male students. So I'll just read 2015. First of all, female students who are getting Vice Chancellor's gold medal for best female student. The first is Akanksha Bhardwaj. जब ऐलान किया कि साहब नोटबंदी कि किस लिए कि साहब भ्रष्टाचार खत्म करना है. She is getting it for LLM. आपने कहा कि best female student. मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं. And best male student goes to Aditya Jindal for LLM. मैं पूछना चाहता हूं कितना आतंकवाद खत्म हुआ. मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कैशलेस इकोनॉमी कहाँ हुई. दुगना फ्लो हो रहा है. आज मार्केट में दुगना कैश फ्लो हो रहा है. तो आप जिस नियत जो यहाँ बताते हैं, जो यहाँ बताते हैं वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते. सभा अध्यक्ष महोदय, मैं ओके बस. Now I'll call the names for LLMs. Vinodhini Rani, SR, best female student. Thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Delhi Special Police Establishment Amendment Bill 2021 and Central Vigilance Commission Amendment Bill. Ms. Vinodhini SR, I oppose these two. best female student. Sir, these bills aim at the extending LLM the gold medal instituted by Vice Chancellor Sir for overall best student on category. the recommendations of the respective committees up to a period of For 1 male year best at a student. time and for a maximum of 5 years later. However, For 2015 batch, mentioned Mr. by Arihant honorable R. members earlier Sanjay. at the stage of the introduction of the bill and discussion during this discussion of these bills. Mr. Arihant R. Sanjay getting Vice Chancellor's gold medal for best male student. Manifestly arbitrary and ultra vires to the Constitution. Sir, the Supreme Court had by verdict of 2018 quashed a plea challenging
retrospective changes in the appointment order of Sri Sanjay Kumar Mishra as For Director of 2016 ED, batch, stating that a firstly I'll reasonable call period of extension LLB can be students, granted LLB honors. to Vice Chancellor's facilitate gold medal completion to of female ongoing investigations best only. student is However, Anupriya the court also Dhanchak. made it clear the extension of tenure of officers who have attained the age of superannuation The should be done best male in student rare is and exceptional Vishesh cases only. Vikram. It had also made it clear that no further extension can be given to Mr. as ED Director. See, sir, the ordinances are not only illegal, but Ms. also Anupriya contrary Dhanchak to the is already Supreme away Court's for a 1998 Rhodes Scholarship. So Jail Vishesh Havala- Vikram is Havala getting case best male verdict. student for It BLLB creates an honors. opportunity to corrupt the directors of law enforcement agencies by offering them an extension of tenure. Sir, they work according to the Ms. political Pooja Yadav for will of the LLM, government. best female It is student. not, it is for of creating an 2016. opposition against the 2019 opposition. I oppose the bill. Sir, thank you, sir. Only honorable member, please, only 2 minutes. Ms. Pooja Yadav, For LLM, Thirma best female Balwanji. student. Honorable Speaker, sir, I rise to oppose these two bills, Central Vigilance Commission Amendment Bill and the Delhi Special Police Establishment Amendment Bill. இந்த இரண்டு மசோதாக்களையும் நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு ஒரு சில நாட்களே இடைவெளி உள்ள Best male student for LLM goes to Nitish Rai Privani. இரண்டு மசோதாக்களுக்குமான I think he is also away to Oxford for his criminal law MSc. ஏன் என்கிற கேள்வி எழுகிறது. நாட்டு மக்கள் இந்த கேள்வியை எழுப்புகிறார்கள். ஒரு தனிநபரை அந்த Thank you, sir, and thank you, ma'am. We now have a very important segment on the release of publications brought out by National Law University, Delhi. I request the Vice Chancellor to introduce the publications. I have the honor to request Chief Guest, Honorable Mr. Justice N.V. Ramana, Honorable Chief Justice of India and Visitor NLU Delhi, to release the Journal of National Law University, Delhi. Sir, I would request Honorable Visitor, sir. Please. I request all the dignitaries on the dais to kindly join in for the release of the publication. பதவியிலே நீடிக்க வைப்பதன் மூலம் அந்த துறையை சிபிஐ மற்றும் என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் டைரக்டரேட் என்கிற இந்த இரண்டு துறைகளையும் தமது கைப்பாவைகளாக கையாள வேண்டும் என்கிற வேட்கை ஆட்சியாளர்களின் கைகளில் இருக்கிறது என்பதை இது உணர்த்துகிறது. அந்த வகையில் இந்த அவசரத்தை நான் வன்மையாக எதிர்க்கிறேன். இந்த இரண்டு மசோதாக்களையும் எதிர்க்கிறேன். பொதுவாக மாநில அரசுகளின் மீது அல்லது காவல்துறையின் மீது நம்பிக்கையை இழக்கிற போது சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்றுதான் நாடு முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் மக்கள் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு சிபிஐ மீது ஒரு நம்பகத்தன்மை இருந்தது. சிபிஐ நேர்மையாக செயல்படும், புலனாய்வு செய்யும், உண்மையை கண்டுபிடிக்கும். We would be having now the next journal. Now I have the honor to request Honorable CM, Mr. Arvind Kejriwal, to release the book titled Future of Democracy in the Shadow of Big and Emerging Tech, published by Center for Communication and Governance, NLU, Delhi. I request again the dignitaries to kindly join in for the release of this publication. ஒரு தனிநபரை அல்லது தங்களுக்கு வேண்டியவர்களை இந்த பதவியிலே தக்க வைப்பதற்காக நீட்டிப்பதற்காக இந்த அவசர சட்டத்தை கொண்டு வந்த போக்கை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நான் வன்மையாக கண்டிப்பதோடு இந்த இரண்டு மசோதாக்களையும் எதிர்க்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, sir and ma'am. And now for the third publication. I have the honor to request Honorable Justice D.N. Patel, Chief Justice High Court of Delhi and Chancellor NLU Delhi, to release NLU Delhi Journal of Legal Studies. I request all the dignitaries to kindly join in for the release of the third publication. तिवारी जी, कर्नल राजवर्धन राठौर साहब, ए राजा जी, कल्याण बनर्जी जी, रंगैया जी, विनायक रवि जी, राजीव रंजन सिंह जी, महताब साहब, सुप्रिया सुले जी, अधीर रंजन जी, डॉक्टर सतपाल, एम आरिफ, रितेश पांडे, बेनी बहनान, सुकातो रायदा, विजेंद्र सिंह जी, Thank you, sir. Thank you, ma'am. ओवैसी साहब, हनुमान बेनीवाल, रवि कुमार जी,
Mrs. Sunita Duggal. Now I have the honor to request Honorable Mr. Justice N.V. Ramana, Chief Justice of India and Visitor NLU Delhi, to deliver the convocation address. शुरू में जब मैंने इस Honorable Justice Ramana. कंसिडरेशन के लिए लाया था तो सब माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप मुस्कुरा के क्यों ला रहे हैं. So I am proud to share that I started with style and I will also conclude with smile. And when I near the conclusion of this debate, there is an added reason for me to smile. Sri Arvind Kejriwal, Honorable Chief Minister of Government of NCT Delhi, Honorable Justice D.N. Patel, Chief Justice of Delhi High Court, Chancellor of National Law University Delhi, Honorable Justice Siddharth Mrudul, Honorable Justice Rajneesh Patnaikar, Judges of the Delhi High Court, Delhi other judges, Justice Vipin Sanghi, Justice C.D. Singh, Professor Krishnadev Rai, Vice Chancellor, National University Delhi, Professor Anupam Goyal, Registrar, Honorable Judges of the Delhi High Court, Sri Manan Kumar Mishra, Chairman Bar Council, members of the Governing Council, Executive Council and Academic Council, Vice President of Supreme Court Bar Association Mr. Rai, senior advocates, members of the Bar Council of India and Bar Council of Delhi, learned faculty members, other distinguished guests, Secretary General of Supreme Court, Registrars of Supreme Court, Registrar General of Delhi High Court, media persons, ladies and gentlemen, my dear students. I am very happy to address this gathering on this occasion of 8th convocation. Before I begin my address, I would like to congratulate the students, parents, teachers and everyone who are contributing to the students to get the degrees and gold medals. Prime Minister Modi holds It marks the culmination of phase of learning. In a very high esteem. Let me also congratulate you on becoming part of an immensely challenging, intellectually stimulating and incredibly satisfying profession. It is appropriate to quote Justice Chagla on this occasion. The legal profession is a great calling and is a learned and noble profession. Remember always that it is a profession. It is not a trade or business. The distinction between the two is deep and fundamental. In business, your sole object is to making money. In the legal profession, making money is merely incidental. Unquote. The father of our nation, Mahatma Gandhi, once remarked, youth are agents of transformation. The history of modern India would be incomplete without acknowledging the role played by students and youth of this country. Many social revolutions and changes were brought about through politically conscious and socially responsible students who raised their voice against existing inequities. Students have been the face of Indian independence movement. In fact, youth have often taken up certain causes and inspired many political parties to take up the same subsequently. Education has a social agenda. The agenda is to develop our human resources, which meet the requirement of the society. An educated citizenry is the greatest asset of any democratic society. Students are known for their readiness to fight for all the rights of causes because their thoughts are pure and honest. They are always in the forefront questioning injustice. Any keen observer of the Indian society would notice that in the past few decades, no big leader has emerged from the student community. This appears to be correlated with the diminished participation of students in social causes after liberalization. The importance of the students' participation in the modern democracy cannot be played down. Public memory is short. It is necessary for you to take part in current debates. You must have a clear vision. It is essential that more and more well-meaning, forward-looking and upright students like you enter the public life. You must emerge as leaders. After all, political consciousness and well-informed debates can steer the nation into a glorious future as envisioned by our Constitution. A responsive youth is vital for strengthening the democracy. It is therefore necessary for students to realize the importance of their relationship with society. Students are an integral part of society. They cannot live in isolation.
Students are guardians of freedom, justice, equality, ethics and social equilibrium. All this can be achieved only when their energies are properly streamlined. When the youth become socially and politically conscious, the basic issues of education, food, clothing, healthcare, shelter, etc. would come into focus in the national discourse. The educated youth cannot remain aloof from social reality. You have a special responsibility. Consider this. Nearly 1/4 of our population still lacks access to basic education. Only about 27% of these in the age group of university students are enrolling for university education. While most of you leave these institutes with degrees and titles, always be aware of the world that you are a part of. You cannot remain self-centered. Don't allow narrow and partisan issues to dominate the nation's thought process. This will ultimately hurt our democracy and the progress of our nation. The youth of today is driven by idealism and ambition. Idealism without ambition may not achieve any positive results. Ambition without idealism can be dangerous. Combine the both in the right proportion and enable our country to emerge as one of the most powerful and harmonious nations. The learning of my generation was different. In addition to formal learning in school and college, the tough circumstances taught us many valuable lessons. When we left college in search of livelihood, the change was not abrupt. There was freedom for us to experiment, work, play and learn from society. Unfortunately, the focus nowadays is on professional courses, to the totally neglected of equally important subjects such as humanities and natural sciences. In an anxiety to secure highly remunerative and profit job opportunities, children are sent to exile in privately run residential schools and coaching centers. The formative years of budding talents are spent in suffocating atmosphere, which unfortunately resembles prisons. Holistic development of a child cannot be achieved in such a restrictive environment. The harsh reality is that even after the student enters professional universities, the focus is on classroom learning and not on the world beyond the classroom. I am not sure who or what is to be blamed for these changes. My general observation on the power and responsibility of students and the youth are even more relevant when it comes to all of you. You are graduating today. You are all law graduates of one of the premier law universities in the country. All of you have a special responsibility to society. Talking of national law universities, I thought it would be relevant to highlight something that I find a little troubling. The primary object behind the establishment of national law universities in the country was to improve the quality of legal education in the country, to produce better trained legal professionals. However, no authoritative study has been conducted to determine whether this has been taken place. Additionally, due to various considerations, most students from these universities end up in corporate law firms. Even though such law firms are an integral part of the legal landscape of the country, it is unfortunate that a comparable addition is not being made to the ranks of lawyers practicing in courts from national law universities. Just now I interacted with 4 gold medalists which I have given gold medals. None of them are willing to be in practice. This is the reality. This is perhaps one of the reasons why national law universities are perceived as elitist and detached from social realities. You must remember that as a practicing advocate, you will interact with a far wider cross-section of the society as compared to being a lawyer working in a corporate law firm. You will be able to spend your time and efforts on causes that you are passionate about. You will be able to fight battles in court relating to various social issues. An enrichment of courtroom advocacy is the need of the hour and is something that the profession must think about collectively. I urge all the stakeholders to consider this issue and come up with some solution. Lawyers cannot be strangers to socio-economic and political realities. With countless tools at your disposal, all the knowledge and information in the world a click away, you are all in a privileged position.
While it is not wrong to choose a life of convenience, I hope that you choose a life of service as well for the future of this nation. You must reflect on the role you can play in the social enrichment and transformation of this nation. Only such introspection leads to development of necessary strength of character and conviction of belief. Be aware of prevailing inequities and ask yourselves, can I be a part of the solution? Particularly in a country like India, you need to be social architects. The legal profession is not about profit initiation. It is a service to your client. Remember your duty to the court and the law. Carry out your sacred task with utmost sincerity and honor. Learning of law is three parts. As a student, as a professional, and in real life. After leaving this beautiful campus, don't get shocked when you see the conditions outside. Courtrooms are not like those represented in movies or moot courts. Cramped courtrooms, judges sitting on the broken chairs, stenographers and court masters having to attend court without adequate arrangements, absence of restrooms, etc. would be a common sight. In this profession, clients will not come searching for you. Success will not arrive at your doorsteps. You have to remain patient and carry on. I don't want to terrorize you as you are embarking on your professional life. These are simple words of caution. I just want you to be aware of what you are getting into. I want you to be ready for the above challenges. I am sure you will be able to overcome these early difficulties. I want you to combine the reality you will face outside this campus with the theories and ideas that you have learned at the university to creatively remedy the existing situation. Always be alive to the harsh realities of the world, particularly the sufferings of the millions of the people in this country. Never compromise on your principles. When you enter the profession, you will take an oath on the Constitution. Always remember your solemn duty to uphold the Constitution and its values. You all are aware, independence of the judiciary is a sacrosanct in ensuring of rule of law. As officers of the court, you must always guard the institution during testing times. You must always remain vigilant about possible attacks. This is our collective responsibility towards the Constitution. It is for you to shape the future of this country. The opinions you write, policies you draft, pleadings and submissions that you file in court, and ethics that you hold dear will have a far-reaching effect. As former US President John F. Kennedy said famously, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Today is a proud occasion for this university and the faculty. In its short existence, National Law University Delhi has formally established itself one of the best institutions of the advanced learning and research in the country. I am particularly impressed by the fact that NL University of Delhi has many research centers engaged in high quality, rigorous academic and empirical research. Its research has been cited both nationally and internationally. On this occasion, it is only proper for us to recall the services of all those who built this institution brick by brick. I congratulate the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal ji, who has a supporting pillar of strength for this institution. I am told he honors every request that is made in the interest of this institution. He is known for his commitment and hard work for the welfare of the people of Delhi. His work in the field of education and healthcare are highly appreciated. Brother Justice D.N. Patel, the Chancellor of this university, is guiding the university and extending all necessary help to make it center of excellency. My brothers, Justice Siddharth Mughal, Justice Rajneesh Bhatnagar, who is working hard to bring this university to a national level and internationally acclaimed university. It is highly encouraging for the student community. I congratulate the National Law University team led by Professor Krishnadev Rai, Vice Chancellor. Under his leadership, the students of this university have won many national and international laurels.
आप किसी भी While सदस्य का बेटा I heartily congratulate those who distinguished अगर आप themselves कहेंगे with कि special मेरी laurels मर्जी से today, नहीं हुआ तो public I want to addressing tell होगी the तो rest बात of नहीं you चलेगी। and your और आप पूछ contributions रहे हैं कि to the what profession about and the CBC and society what are about going to be ये जो no less प्रावधान है important. आपकी सरकारों से चले आ If रहे I may हैं, add, विरासत में I मिले। also belong to your league at the जहाँ time आपको of my समझ आया कि graduation. CBI का सिलेक्शन कमेटी गलत Once है। again, I congratulate हम तो each of 2014 में you आए। and I wish you success and all your उससे पहले future जो endeavors. आपने God bless रामराज दिया you. था, Happy वो and उसी की विरासत meaningful है। life ahead. Thank you very much. ये सारी सिलेक्शन कमेटियां पहले की बनी। फिर ये कहा गया कि बाकी देशों में होता है तो ऐसा क्या है? मैंने ये लिस्ट निकाली है FBI का 10 साल। I request now the Vice Chancellor, National University, Delhi, to invite the Chancellor to close the convocation. I have the honor to request the Honorable Chancellor, sir, to declare the They have a convocation Director General, closed. United Kingdom's Internal Counterintelligence and Security Agency. No fixed term. No I fixed term request at all. everyone to kindly rise हमने for तो the 5 साल national fix कर anthem. दी। Average मैंने फिर निकाली, which I could have not done because that may not be very suitable for May me. we But have I took national out the anthem, average, please? which is again 5 years, 5 to 7 years. Federal Regional Police Officer of Germany. Average 62. No fixed. Australian Federal Police. सदन का चर्चा तक और प्रस्तावित पारित होने तक बढ़ाया जाता है। Federal Criminal Police Office of Germany average 6 to 10 years. Since 1980. Australian Federal Police, very interesting. Tenure of 7 years with a clause for, अब क्या कहेंगे कि भाई वो 7 साल में अपने मास्टरों को खुश रखेगा Thank ताकि you. मुझे अगले 7 साल मिले। Please be तब तो seated. दुनिया का निजाम चलेगा ही नहीं। I would request हम our यहाँ ये आरोप dignitaries लगा रहे if they would permit us for You are the making an group allegation against a photographs. duly elected body, a duly the elected leader of students. opposition. We can have, sir. फिर आ गया Call quickly batch wise. Batch wise, yes. So I would request Royal the Canadian PhD Mounted students Police. to come up on the stage no quickly fixed term, average is 4 and to 10 take the years. positions behind the chairs of the अब dignitaries. ये चंद एक उदाहरण of some of the leading democracies in the world. Behind. अब हम क्या उदाहरण अपने लिए स्थापित करना चाह रहे हैं और क्या? Unless we have something to hide. PhD to पीछे खड़े हो। And let me tell you, when each time when we say that Okay, you could There perhaps is- file up in the front, and if you can just kneel down. Some mala All of file you in can this. just follow we up, please, forget that we quickly. might be inviting the accusation Just of come up in hiding a single something within file. ourselves. You can We just, have nothing to hide. There is no reason to fear. अब yeah, behind. आई एम ग्लैड सुप्रिया सुले जी ने सजेस्ट किया You कि can हाउ come this side. चेंजिंग वन क्लॉज वुड एड्रेस सो मेनी इश्यूज आई एग्री विद यू बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर सो यू मस्ट वेलकम वी हैव टेकन अ वन स्मॉल स्टेप टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज वील बी टेकिंग मोर एंड वील बी एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट बाकी she raised certain other issues which I am not taking much cognizance because more than addressing the bill, they were addressing the agenda of the Maharashtra government. So I leave it to that. अब अधिरंजन दा चले गए मैंने कहा था there are added reasons now to smile. उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही. Thank you so much. The exact phrase he used, which he had written Now I down would very request the beautifully LLB coined. batch, Culture of subversion which is sitting here in the hall, being to introduced quickly by come the up Modi government. on the stage. अब इसमें स्माइल वाली क्या बात है? The This girls is coming can from a party stand which has perhaps gone just down in before the history stage here, of subverting and I would the request the democracy of the dignitaries to country. kindly come forward. Having if it's imposed okay for you, emergency, sir. Yes. also subverted not only Well, it's a democracy, bigger subverted batch, the so- constitution of India. अब बताएं, अब हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? We live in a world of evidence. अब ओवैसी साहब
is a non-knowing person, ऊंची आवाज में बात करते हैं, उर्दू भी उतनी खूबसूरत So बोलते the हैं, boys जितनी can अंग्रेजी come बोलते up हैं, तो कुछ and लोग they उसी can में रह just जाते हैं। kneel before the dignitaries here in a single line, single or two, and the अब वो कह girls रहे can थे कि come in the front. integrity of the constitution, ये जो उन्होंने एक हवाला दिया एक केस का, उन्होंने कहा इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, but is this not contempt of the constitution to question a constitutionally constituted body is existed in the selection process and which has come down the years, down the decades, not invented, not constituted. This is a batch of 2020 which has graduated. जज बोलते हैं So ना, you मैं could कह रहा हूँ come, कि you constitution could and form contempt two उससे भी घोर पाप है। rows here. 2 rows could be formed. because Contempt you are of constitution and involved contempt in of number. democracy is even graver sin. Really, that is in the court language. I am not talking of the litigation. I am talking in. No. Yes. So you mean you can sin against so you are at liberty to sin against constitution and sin against democracy. Oh भाई मैं that is. चलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कह रहा हूं कि बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा गया और उसके बहाने कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज पर भी सवालिया निशान, सिलेक्शन प्रोसेस पर भी सवालिया निशान होता होगा, लेकिन क्या ये एक चिंतन का विषय नहीं है कि वी कैन रेज क्वेश्चन मार्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द डेमोक्रेसी? If it was contempt of court, the court would have stepped in. It was not your prerogative. Thank you so much. Now, I'll just share with Manish ji. He made a factual point which I would just update you. Guwahati High Court had come out with a judgment which Can you is please right quickly and go CBI back in a single line उसके and बाद not make too there much was a noise? SLP file. So that judgment has been stayed. So if it is stayed, as long as it is stayed, we need not get into that. It is sub judice. Now, without taking long, because So as this batch moves out, the LLB batch, next batch, can we have them quickly on the stage? ठीक है. Okay. No. It's The LLB not, 2019, it's not directly related 20 to is, this party. So this is a 2021 batch, right? pass. Yeah, please come in. Now, एक बार आया कि why raise The way we international formed the angle? formation There is a earlier, huge so the international girls can be ramification on this side and the to boys the can come up kind on of the stage. methodology which is evolving every day. Can And you have just seen so quickly many do cases. that? और ये फॉरेन लॉन्ड्री के केसेस सारे ईडी के हिस्से में आते हैं. और जैसे मैंने कहा कि we cannot only depend on the institutional Yes, can we have a little intelligence, faster movement? information and confidentiality also of the individual who is at the head of it. The boys, And yeah. moreover, You can move here. जो हमारी You can have 2 to 3 rows. FATF है, फाइनेंस अथॉरिटी FATF, उसने ये सुझाव भी दिया है कि some of the countries will have to look into how to upgrade their capabilities, and I quote, law enforcement authorities You can make 2 and rows here. countries should have in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, and should be high integrity and be appropriately skilled. Now, they are expecting us to rise to the same level as some of the other countries, जिनका मैंने आपको ब्यौरा दिया. कहीं कहीं 10 साल है इसका टेन्योर, कहीं कहीं इंडेफिनिट है, और इसलिए और अगले साल इसका रिव्यू भी होने वाला है. So if we have to meet the global standards and reach the global pedestal, which India is already at the threshold, I think we should be more progressive and forward-looking. I am not going to get into detail of this because honorable members are already now, they have borne with all of us for a very long time. So I will just request that if
if we do not Yes. extend this or bring in this provision, which is Thank not you. extension actually, It's coming. but Okay. restrictive approach may be counterproductive to the interest of justice and fair delivery of the interrogation investigation results. And from that point of view, मैं एक बार फिर से अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि in good faith and in an atmosphere of trust हम इस विधेयक को स्वीकार करें और ये कामना करें कि आने वाले समय में भारत विश्व Thank you पटल so पर much. एक भ्रष्टाचार Yeah. मुक्त We और can क्राइम now मुक्त देश have के रूप में अपनी एक स्थान बना LLM सकें। batch. प्रेमचंदन जी Thank you, Speaker, sir. Sir, The 2019 I would like batch, to is reply, it sorry, I would present like to here? reply to the Yeah, Honorable please Minister come. regarding the statutory resolution Yeah. with the smile. Sir, the point which I would like to make is regarding the urgency and exigency or the extraordinary situation prevailing in the country so as to promulgate this ordinance. All This was the students, please fulcrum sit in of your my respective argument, the entire places. argument. The Honorable Minister has not spoken anything about the Yes, the situation LLM arising batches, please for come here promulgating quickly. an ordinance. That means the argument advanced on the part of the opposition that this is a misuse of Article 123 is well ratified. That is the first This point. is I in will conclude 2019. within 2 minutes. So we have the And, 2019 batch another now. issue, sir, another issue is मैंने अभी भी कहा, इंट्रोडक्शन में भी कहा, मैंने कहा ये तो इस बार अध्यक्ष महोदय जी की सूझबूझ का नतीजा है, नहीं तो पिछला सत्र तो वॉश आउट हो गया, तो फिर तो कोई भी कानून नहीं बनेगा, कोई लेजिस्लेशन बनेगा ही नहीं. We had to move on. We could not wait for the protest to settle down. Yeah, quickly because come, this please is join a first. provision which is going to reflect I India's hope there's no one image else left. at the international You are forum. from the batch. So that is the urgency for the country. Sir, the last session which was washed out, this House has passed 21 legislations. Yeah, Compliment the Honorable Speaker for that. yeah, yes. If you can, Are there more if you boys can from this pass batch? Can you just very quickly come up on controversial, the stage? very controversial legislations during the washout session, this could also have been passed. So, ऐसा है, in that case you would say it was passed in din. आप कभी उधर से पकड़ते, कभी उधर से पकड़ते. So now you are also smiling. I think we'll go let it go in that note. you are changing the goalpost from one post to another. No, I'm really sorry. So 21 legislation you could have passed in the last session, and you are saying that the whole session was washed out. So it is that sir, the second point which I would like to respond is regarding, I admit and appreciate the honor. So, I would the like photographs to are taken of this admit and batch. Thank appreciate you the so honorable much. minister. And the Selective next use batch of is CBI. You are absolutely required to be correct. ready I immediately can cite an and come example quickly from now. my state itself. Because now our state government is fighting against CBI by spending crores and crores of rupees that the CBI shall. All the students, please go back to your seats. We will have the reverse academic I said selective procession use now, of the just after consent this. to CBI. In the context of what Sugata da was saying. General consent ले लिया, लेकिन जहाँ yeah, consent. So it is like that. Anyway, Yeah. now we are equal. Yeah, I have meant for it. I actually meant it. See, please come up, hurry up. The state government is fighting against coming On of the CBI stage, in the state of Kerala. And at the same time, those cases in which they are interested in order to have the political vengeance, and that is being concerned, not only concerned, requesting to the CBI to investigate into the case. I am not citing the example. So that is there. So therefore also, the point which we are raising is, the state government is giving consent, central government is using this force, so better to have an independent status for the Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate. Let it be above the administrative control of the Prime Minister and the government, so that independence can be maintained. So that is the best thing which the government can do. And the third point which I would like to make is regarding the selection committee You are always talking about the selection committee, Prime Minister and the leader of the opposition, and also the Chief Justice. That is only in respect of CBI.
As far as the enforcement director is concerned, it is absolutely a bureaucratic committee which is under the... No, I am not making any version. No. Thank you so much. move करना Thank चाहते you नहीं so करना very sir, much already to moved. all our esteemed Sir, sir, guests sir, sir, for sir, their sir, immense I'm patience Sir, and sir, very so gracious regarding presence. the CBI Thank you, only, sir and This ma'am. Prime Minister comes, opposition I request leader the comes. dignitaries As far to as come, please the come back to enforcement the director, it is seat. प्रश्न ये है absolutely कि the women NK fancy of the प्रेमचंद government. द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में सामाजिक संकल्प अस्वीकृत हुआ। बाद में प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में